Panthers Super League 2023. And two teams which just came into the big final, of course, deserve this place where that their battle in the league matches, where they battle in the second round matches, where they battle in the playoff round, and deserve this mega final. But job is not yet over from both the teams. They doesn't want to see in the runner-up position. Both the teams wanted to lift. Both the teams wanted to touch what an attractive trophy of a Panthers Super League. That is a winner trophy. And wait and see which team will go into touch this trophy. The umpires saying that the time which is noted, it's a 9:14. And you need to complete your 7 hours within 30 minutes. Here is the first ball of the mega final. Left arm over the wicket, copybook style of defensive stroke. This is a big difference between playing in a 5 hours format of a games and 7 hours format of a game. All in sudden, Gopi, earlier stages, the batsman not really bothered about whether playing the first delivery or not. He only saying that he want to swing the ball. But as far as a 7 hours format of a game, look at the mindset of the batsman. Already we can see that the copybook style of a defensive stroke comes into play. And here is again a second delivery of this over. Bowler Karthik Nayak bowling away from us for the left-hand batter. Varun, useful left-hand batsman, a good striker of the ball, will go into face a next delivery. Left arm around the wicket, using his feet, and this time he lofted down to deep backward score. Like the fielder is there in the deep backward score and deep wicket, but both the fielders are seeing each other, but not trying to stop the boundary ball. Just winning the race, and it's first boundary came here for VV cricketers. I think Varun is not impressed with my announcement, as I told that he is almost in a defensive frame of mind after playing that defensive stroke. He's just coming down the track using his feet and got the boundary for his team. And but the intention, the game plan, the strategy is very clear from these two opening batters that they need to utilize, they need to capitalize this power play over, because fielding restriction is on. The opportunity is a golden opportunity for the batter to get some good score in this tour of the power play. Bowler Karthik. So far, Karthik has got a fantastic tournament from the ball as he bowls left arm over the wicket. The ball is swinging that one. Ball is in that. Fine leg fielder takes the catch. First wicket of VV Warriors are back into pavilion. It's a time for Pawan to Varun to back into pavilion. I think he couldn't manage to control that emotion after getting that boundary. He wanted to repeat that one. Absolutely, Gopi. It's a short pitch delivery, isn't it? Hittable delivery. But the fact that the batsman little bit early into the stroke, ball which came very late to the bat, maybe one of the strategy from the bowler to bowl that slower one, backup line delivery. That's why the batsman Varun completely missed out that delivery. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद फेंकी थी इस वक्त, थोड़ी सी गेंद को उछाल करवाया था गेंदबाज ने, और आखिरी मौके पर इस उछाल को समझ नहीं पाए, गेंद को पुल करना चाहा और गेंद टॉप एज पर टकराने के बाद स्क्वायर लेग पर लपक ली गई। तो पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है और निस्संदेह इस पहले विकेट के गिरने के बाद अब वीवी वॉरियर्स को जरूरत है एक साझेदारी की, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होना है तो। Exactly, Gopi. Partnership definitely going to be key for the success. They need to get one good partnership if they wanted to get a good score here. As a new batsman, Balakrishna Nayak came into middle and straight off the mark. Just a soft end comes into play. Sensible batting here from Balakrishna, saying that he lost the wicket of Varun and need to play as per the condition required. They try to wanted to, of course, the consolidation is very important here for the VB cricketers after losing a wicket of Varun there. And it's 5 for the loss of 1 wicket. Karthik has got a very, very important breakthrough from his bowling. Karthik Nayak changing his angle. Rightly so, because right-hand batsman is on strike. First time he facing, and the batsman facing Deepak, and is one more very good striker of the ball and useful batter, especially when it's a power play is on. He's got a potential. He's got all the technique of getting big shots as far as the power play is concerned. That's why he's been sending every time to open the innings to capitalize that fielding restriction in the power play overs. Wait and see how the Deepak will go into capitalize this fielding restriction. Karthik again, left arm, changing his angle, appeal for leg before wicket. More than the confident, I think, is just looks like the excitement. Ball is just going down the leg stump. At the same time, bowler Karthik is coming right in front of umpire as well. That's what umpire is saying, that don't come
in front of me. It is a protected zone, isn't it? At the same time, the ball is definitely going down the leg stump. The seeing that the bowler coming wide off the crease. When you are bowling wide off the crease, then ball is angling across, isn't it? And ball just going down the leg stump rightly. So umpire not interested to raise his finger. 5 for the loss of 1 wicket from the commentary box, and bowler bowling left arm round the wicket to the right hand batsman Deepak. This time drives that one powerfully down to mid-wicket, clearing the infield, but long chase here for the fielder. I don't think the long on fielder, mid-wicket fielder, definitely going to cut it off. And before he will going to reach there, the batsman has got ample time to complete that couple of runs. And with that couple of runs, Gobar now moves on to 7 for the loss of 1 wicket. First over completed. And Gopi, equal result, isn't it? 7 in the first over. I don't think it's going to be a bad over because they got one valuable wickets of Varun. And altogether, Gopi, it's a good start for both the team. 7 is a good run. At the same time, 1 wicket is definitely going to be the very good start for the bowling side, RK Strikers. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, दोनों टीमों के लिए यहाँ पर एक अच्छा शुरुआत है। 7 रन बन चुके डेडली वॉरियर्स के, जबकि 1 विकेट प्राप्त करने में सफल आरके स्ट्राइकर्स। और जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, तो डेडली वॉरियर्स को इस वक्त कम से कम 50 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा, क्योंकि ओवर्स के फॉर्मेट जो कि बदल दिए गए, 7 ओवर्स का फॉर्मेट है, तो एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है। अंडर दिस कंडीशन इफ दे हैव टू स्कोर अ गुड टोटल, दे हैव टू क्रॉस एटलीस्ट 50 मार्क। और जहाँ तक सवाल है आरके स्ट्राइकर्स का, तो 50 रनों के आंकड़े के अंदर इस वक्त रोक कर रखना होगा वीवी वॉरियर्स के बल्लेबाजों को। अगर आरके स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों के लिए लक्ष्य आसान होता है, तो उससे पहले गेंदबाजों को इस वक्त बल्लेबाजों पर दबाव डालना होगा। तो देखते हैं आने वाले ओवर्स में यहाँ पर क्या होता है। Exactly, Gopi. That strategy, the game plan is so important when we are playing a big final, the mega final. It's a different ball game, isn't it? Handling the pressure is so important in this mega final. So Ashwath Pai is a very important player for the side of RK Strikers. Is brought into attack from the professional career, and is bowling. Then that batsman tried to pull that one. Wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. Varun Shanbag behind the stump fails to collect the ball. But here is umpire not missing the opportunity to getting some evening exercise under floodlight to signal the wide, and 9 on the board for the loss of 1 wicket. Ashwath Pai usually is a very good bowler, but sometimes happening, isn't it, Gopi? When it's a left and right combination, it's not so easy for the bowler to change the line and length, isn't it? Definitely it's a good ball for the right-hand batsman if the right-hand batsman is on strike. As the fact that left-hand batsman is on strike, that ball is just going down the leg stump, and rightly so umpire called that wide. 9 for the loss of 1 wicket. Ashwath again seaming in from the far end. All right, I'm over the wicket to Deepak. Deepak, chow, lovely shot, lofted that one. Handsome looking shot. Ball is just clearing the ground. That's what I am talking about, the potential of this man. He is such a good striker of the ball. When he hits clinically. And what is a neat throw coming from the bat of the batsman Deepak there. Ball is, of course, is almost in the slot, but he need to deliver, isn't it? Timing is perfection in the negation, and the flow of the bat is so good in the negation there from Deepak, and he got the distance for that. And 15 for the loss of 1 wicket. First sixer of the mega final came from the bat of Deepak. Ashwath now, he's a little bit under pressure now. After that 6, wait and see what he will going to use that weapon. This is the best weapon to use, isn't it? Not to ball around the bat of the batsman. Deepak is never going to miss the opportunity to ball to into the slot, so that the batsman bowler quickly realizing that and ball outside the line of off time. Good comeback from the bowler's point of view as he bowled outside the line of off temp and dotted delivery. 15 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Left arm over the wicket, going for the big shot. Ball is in there. Chance of caught and bowled, and is stopped. Not a drop, but he's not really able to reach that catch. He's tried his level best, but not really able to reach that catch in the negation. Ball just falling short of that trying hands of the bowler, and Deepak just dealing with some luck here as he was trying for one more big shot, not quite getting hold up that one properly, and luckily that ball didn't carry to the fielder. 16 for the loss of 1 wicket. 70 runs, what VV Cricketer's captain is told when he's questioned how many runs you want to score, and he's told that 70 I want to score, so that I want to put some pressure on to the opposition batsman. Now the bowler Ashwath Pai. This nicely driven, nicely placed that one down the square leg region. I think it's a batsman doing a great job in the other end. And I think the batter Balakrishna
just wanted to play the acting role. This is so important in cricket, isn't it? When you want to get the partnership going, one batsman need to be defensive and one batsman need to be offensive. And that's what really these two batsmen is doing in the middle. A right job. 17 for the loss of 1 wicket. Again, lovely delivery outside the line of off stump. Just an excitement behind the stump, but not a confident. One more dotted delivery. Now Ashwath just learning from the mistake. This is so important for the bowler, isn't it? After that punishment which came from the bat of Deepak, he's just quickly realized what kind of mistake he did, and he's just bowling outside the line of off stump to defeat the bat of Deepak. Again, left arm. Oh, the wicket, lofted, but ball definitely going to be, oh my goodness, the fielder is trying his level best to top that one, but ball once again defeating that fielder, ball just hitting the one of the spectators who is sitting in that deep long off region, and the second sixer came from the bat of Deepak in the particular over. Just look at that one in the replay. Again, the batsman making a premeditated that he knows that now the bowler will go into bowl outside the line of off stump, little bit moving towards off stump and getting that one right from the middle of the bat, lofted that one handsomely, and he got a distance at 23 for the loss of 1 wicket. And Gopi, just like what captain is told that my team wanted to get the 70, they're going in the right way, they're going in the right track. That 23 runs which is came from that power play over, that means the power play which is going in favor of batting VV Warriors. Exactly, Satish. जिस तरीके से कप्तान ने वीवी वॉरियर्स के कप्तान ने कहा था कि कम से कम 70 रन हमें बनाना है निर्धारित 7 ओवर और अपने इस योजना को यहाँ पर कार्यगत लाते हुए उनके बल्लेबाज 2 ओवर में 23 रन जोड़ चुके हैं पावर प्ले के 2 ओवर में, और निस्संदेह द फर्स्ट 2 पावर प्ले ओवर्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बैट्समैन ऑफ वीवी वॉरियर्स. लेकिन यहाँ पर मौका जरूर है आने वाले ओवर्स में स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को बाउंस बैक करने का, और देखते हैं आने वाले ओवर्स में किस तरीके की गेंदबाजी वो यहाँ पर अपनाते हैं बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने के लिए. Exactly, Gopi, and bowling change in from the commentary box and starts with the warm-up delivery of the night by the bowler Abhijit Kini. 137 sixes, Gopi, so far in these 2 days of cricket tournament. It's been, that means a raining of sixes, isn't it? 132, in fact, let me correction, 132 sixes which just came so far in this particular tournament of this prestigious Panthers Super League 2023. Abhijit Kini. Balls again, that going to be wide ball. This is not the Abhijit Kini who watched in previous 2 matches. He's been outstanding so far in the tournament because of his bowling. His RK strikers came into this big final, but might be a little bit under pressure situation in the big final. In the last match, Gopi, he took the hat-trick wicket, and Abhijit Kini needed such kind of performance in the big final as well. Abhijit Kini bowls this time nicely bowled. There's a perfect line to ball, but look at the batsman here. Sensible batting there from the batsman Balakrishnan. You know exactly, without any effort, big effort, he got 2 runs. Then why can't I to pick the single and give the strike as much as possible? This danger man, Deepak, so far is batting so well. 15 runs which is scored in just 7 deliveries. Strike rate is more than 200. Abhijit, this time something is going behind the stump, and Varun Shanbag behind the stump just shouting there because he's not satisfied with the field set. But I want to once again remind for the fielding team, 30 minutes, you need to complete your 7 overs, and that point to be noted here. Already it's 17 minutes they've taken, so need to be a little bit quick here. As again the bowler Abhijit Kini. Right arm over the wicket. Beautifully driven, but lack of placement. Bhakta there in the deep extra cover is one of the safest pair of the hands in a deep extra cover. Not it's so easy catch. Almost ball looks like going to carry to the fielder, but ball just came into him in off volley. But he's tried his level best to take the catch. If he's able to take the catch, definitely it's going to be a big fish in the net. But unfortunately, Saurabh Bhakta. Just I want to see it in the replay. Let's just look at it one LED screen here and look at the effort there from Peter. Absolutely perfect, isn't it? He couldn't manage to hold that catch again. Abhijit Kini bowls Yorker delivery. What a fantastic delivery there from Abhijit Kini. Looks like I think it's a little bit excitement there from behind the stump, and for Abhijit Kini is saying something here for the umpire. Maybe he's telling that ball maybe the kissing the leg stump here. Not really very far from the leg stump. I want to say that ball might be the brushing the leg stump, but bails are not uprooted. That was a little bit disappointment here for the bowler, isn't it? 27 for the loss of 1 wicket. Abhijit
Balls beautifully bowled, equally well played there by the batsman. Sensible batting from these two batters in the middle. After getting a valuable runs in the first two of the power play, they now exactly knows that the fielding is spreading out. So many bodies out there in the deep. It's difficult to get the boundaries and sixes. Then now they're just rotating the strike. This is a great strategy from these two batters in the middle, and the partnership is really building very well for VB cricketers. Again, away from us, right arm over the wicket balls. Full toss, lofted, but the fair fielder is in the deep long on. Can he able to take the catch? No, he drops the catch. No, he drops the catch. Will it going to be a costly here? Why not? Sandeep is a fielder in the deep long on. Is known to be one of the safest pair of the hands. But look at that one in a replay. We are not having that much of good view from the commentary box. What really happened? But a fielder from the deep long on, little bit is in a wide-ish actually. It's a little bit squarer, so he couldn't manage to reach there quickly. But he just drops the catch. And the batsman got a single here. 29 for the loss of one wicket. Ground free corn देऊ का ते सकल बेसिल for वैर बैसू का म्हणून विनंती. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ದಯಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Again, lovely good placement there from Balakrishna. What innings is playing absolutely perfect, isn't it? He's picking up the singles, and other end Deepak is getting some score in the form of big strokes. So 30 runs scored in just 3 overs, Gopi, and lost only 1 wicket. That means 10 runs per hour, still progressing. Just like you mentioned, Gopi, when if they lost the wicket of Varun earlier, and we are talking about the 7 hours format of the game, it's definitely going to be a good move there by the organizer to have a 7 hours format of a game. Then look at the way, the time they got to adjust, the time they got to recover, and they recovered very well, isn't it? Both the batsmen now playing very well. Now, RK Strikers desperately wanted to break this partnership. They wanted to restrict them less than 70 what they're targeting here. बिल्कुल सतीश, पहले वरुण का विकेट जब गिरा था तब ऐसा लग रहा था आरके स्ट्राइकर्स के गेंदबाज छा जाएंगे, लेकिन जो फॉर्मेट को इस वक्त बदल दिया गया है, जैसा कि आपने फरमाया 7 ओवर का फॉर्मेट है. यहाँ पर देखिए बल्लेबाजी की शैली बदल जा चुकी है. यहाँ पर बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए, और वो जानते हैं 2 ओवर ज़्यादा है, यानी 7 ओवर का खेल उन्हें खेलना है, तो पहले 3-4 ओवर देखकर खेले, विकेटों की सुरक्षितता पर ध्यान दें और उसके बाद आक्रामक स्ट्रोक लगाए. तो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए और अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करते हुए, और विकेट जहाँ तक कमबैक करना है तो आरके स्ट्राइकर्स को इस वक्त इस जोड़ी को तोड़ना होगा. देखते हैं आने वाले ओवर्स में क्या होता है. Exactly, Gopi. The breaking the partnership is so important. But both the batsmen are settled down, isn't it? They settled down in the middle. Now they are very difficult for the RK Strikers to break this partnership again from the far end. Balls, and this time going for the kick, single chance of run out. That if it is direct, it is going to be a close one. But ball misses the stumps, and Deepak once again dealing with the luck here. Of course, the ball is tried his level best to make that run out. Just look at it on a replay as the batsman tried to drive that one, not really having enough bat onto that, but then bowler on his follow through tried to hit the stump but misses the stumps, and Deepak survived from that run out. 32 for the loss of 1 wicket. Grabbing the opportunity is so important, isn't it? Opportunity is not really coming to your way regularly. When it's opportunities offered in front of you, you need to grab that opportunity. One is a catching opportunity, is a tough one. The second one is a run out opportunity. This is on also a very tough one, not an easy one for the fielders of RK Strikers. Look at the crowd here, absolutely fantastic crowd. All we can see that in UCG ground, the good number of crowds enjoying the game of cricket of this mega final of this prestigious Panthers Super League 2023. This time driven that one powerfully down to deep long on, but not more than a single. Protection has been given in the deep. Just like I mentioned, after that power play, we can see there's so many bodies out in the deep. One deep long on is there, one deep mid wicket is there, deep backward square leg is there, and one at the deep long off and deep mid wicket. Now strikes rotated, left hand batsman back on strike now. VB cricketers definitely the supporters enjoying the batting of these two batsmen. Even RK Strikers desperately wanted to see 1 wicket here. This time they're going up. Why not? They got the wicket. This is a wicket. What I want to say, Gopi, this is not a wicket-taking delivery. This is not a wicket-taking delivery. This was a hittable delivery. This is the beauty of cricket, isn't it, Gopi? Sometimes you are not getting a wicket for the good balls. Sometimes you will going to get the wicket for the bad balls. This is a perfect example, isn't it?
एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त ये गेंद जो हिटेबल गेंद थी, इस गेंद पर चाहे तो गेंद को डिस्पैच कर सकते थे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट हुआ बल्लेबाज द्वारा और गेंद को पुल करने के प्रयास में चूके और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। तो निस्संदेह सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, कभी कभी बेहतर गेंद पर गेंदबाज को विकेट नहीं मिलता है और कभी कभी खराब गेंद पर बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और बेहतर गेंद पर गेंदबाज को कभी कभी विकेट नहीं मिलता है। तो यहां पर खराब गेंद थी और बल्लेबाज अपने स्वयंकृत गलती की वजह से यहां पर विकेट खो चुके हैं और जहां तक इस साझेदारी को तोड़ने की जरूरत थी, यहां पर इस साझेदारी को इस वक्त तोड़ चुके आरके स्ट्राइकर्स के गेंदबाज। अब देखना है कि आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर वो किस तरह इस वक्त दबाव बढ़ा पाते हैं। Absolutely, Gopi. The partnership which is broken, but headache which is not complete over because one more big striker of the ball is just came into middle. He's got a fantastic tournament from the bat and ball, and he's just the biggest contender for the man of the series as well. It's none other than Vignesh Shanai Karkal. This time again outside the line of off stamp, missed it completely, and wicketkeeper behind the stump did the rest. So 33 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. The bowler is introduced from the far end. Ashwath Pai is able to broke the partnership with the one short pitch delivery outside the leg stump, inviting the batsman go for the pull shot, and batsman has got an inner part of the bat and wicketkeeper behind the stump did the rest. It's a 33 for the loss of 2 wicket, and bowler once again Ashwath Pai get to bowling to the right-hander batsman Vignesh Shanai Karkal. Ashwath balls, looking for the big swing of the bat. He loves to play that kind of cricketing stroke, but this time again Ashwath handling the pressure very well, isn't it? It's not so easy when you're having a batsman like Vignesh Shanai in front of you. They needed some kind of game plan, needed to have some kind of innovative thinking, and so far I think is the 2 deliveries which is bowled by Ashwath Pai. He exactly know the what kind of deliveries is needed to ball to this man Vignesh Shanai. Is yet to open the account. It's a 33 for the loss of 2 wicket. Ashwath again bowling from the far end. Again swings and missed, 3 consecutive deliveries. Fantastic over is comes in, and just 3 runs came from that over and 1 wicket as well for Ashwath Pai. And this is a comeback over, Gopi. This is absolutely comeback here for RK Strikers, isn't it? And just like the captain is mentioning about the 70 runs they wanted to get, now because of this over, I think getting 70 might be a little bit difficult one, but I think RK Strikers captain is told that he wanted to restrict the opposition less than 60, and definitely the game plan which is working out for the fielding team as well. एग्जैक्टली सतीश, ये ओवर कमबैक ओवर था आरके स्ट्राइकर्स के लिए। 3 रन सिर्फ अश्वथ पाई ने प्रदान किए और इस ओवर की बदौलत यहाँ पर जहाँ तक सवाल है आरके स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों का, तो इस मैच में वो वापस आ चुके हैं। अब 70 रन बनाने की योजना थी इस वक्त वीवी वॉरियर्स की। अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 33 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। तो अब ऐसा कहना पड़ेगा 70 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी यहां पर अपनानी होगी। तो इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए तो इस वक्त अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। निश्चित रूप से यहां पर रन और गेंद के बीच में, बल्ले और गेंद के बीच में कड़ा संघर्ष जो कि जारी है। तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। So 34 for the loss of 2 wicket, 4.1 overs gone और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और पहले ओवर में
पहले और दूसरे ओवर में बेहतर रन बने थे, तो उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक करते हुए इस वक्त गेंदबाजों ने परिस्थिति को अपने नियंत्रण में किया। अब कुल मिलाकर वो सीधी और सदी लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद इस वक्त अपील जा रही है, लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर बोर्ड स्टेज एट 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो जहां तक सवाल है वीवी वॉरियर्स यहाँ पर रनों के लिए कुछ हद तक अब संघर्ष करता हुआ, पहले 3 ओवर में 30 रन बन चुके थे, तब ऐसा लग रहा था वीवी वॉरियर्स के बल्लेबाज छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन वापसी करते हुए आर्म स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने यहां पर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लाने में सफल। अगली गेंद और इस बार फुल टॉस एंड हिट दैट वन इन अ स्टाइल, इट्स गॉन ऑन द इनटू द कमेंटेटर बॉक्स स्टैंड एंड इट्स अ ह्यूज वन। विघ्नेश के बल्ले से यह छक्का इस वक्त लग चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट कॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड दैट वन इन अ स्टाइल। Have a look at that one in the replay. Lofted and firmly, and he's got the distance straight in front of commentary box. और छक्का इस वक्त जुड़ चुका है विघ्नेश के खाते में। अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद फुल टॉस, टॉप एज, गेंद इस वक्त अवे में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए मिड विकेट पर बेहतर कैच, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द फील्डर। 10 से 12 कदम दौड़ते हुए गेंद पर अपनी नजरें गड़ाई रखी और आखिरकार इस कैच को लपकने में सफल, और इसी के साथ तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। तो 42 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है। छक्का लगाने के बाद एक बेहतर पारी की मुनसूचना यहां पर दे चुके थे बल्लेबाज। अगली गेंद पर उनका विकेट गिर चुका है। यहां पर टॉप एज पर गेंद टकराई और एक बेहतर कैच शॉर्ट फाइन लेग से दौड़ते हुए स्क्वायर लेग पर 10 से 12 कदम यहां पर फीडर लपकते हुए। तो 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड दिस इज द 5th ओवर इन प्रोग्रेस। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस कॉम्पिटिशन पैंथर्स सुपर लीग 2022 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का खिताब दर्ज करने के लिए इस वक्त मुकाबला जारी है आरके स्ट्राइकर्स और वीवी वॉरियर्स के बीच में। तो आरके स्ट्राइकर्स के कप्तान ने पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और यहाँ पर अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद फुल टॉस, गेंद कौन साइड पर खेलना चाहा, बैक टू द बॉलर की सामने। ओह, इस बार रन आउट हो चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन और यहां पर विकेट गिर चुका है। और इस विकेट के पतन के साथ मैं कहूंगा यहां पर आरके वॉरियर्स आर नाउ बैक इन द मैच। At one stage, they were 30 for the loss of 1 wicket after completion of 3 overs, and now they are 42 for the loss of 4 wicket. That means they lost their 3 wickets for adding just 12 runs on the board in between 30 to 42. And this is an outstanding comeback made by the bowlers of RK Strikers. Kyun Satish? Absolutely, Gopi. Needed such kind of comeback, Gopi, because VP cricket is looking quite dangerous in the middle, especially the wicket of Vignesh Shannai, Gopi, because he's after hitting a 6, it looks like he's a danger man. And if he continue that one, definitely it's going to be very difficult for stopping him. It's unstoppable once he gets his rhythm back, is unstoppable. And a good comeback, especially the bowler, I think the previous over, which is bowled by Kinney. And so far he's got a wonderful cricket run, but it's not so easy, Gopi, when the batsman hitting you for the 6. Your level of confidence almost coming down. And it's not so easy to handling the pressure, but he handled the pressure very well. Immediately, very next ball, he picked the wickets. And we can see now RK Strikers fans are alive. And of course, happy faces we can see here in our owner of RK Strikers. And Pratap and his family is enjoying the game of cricket here in our commentary box. Definitely they wanted to see their team to lift this prestigious Panthers Super League 2023. At the same time, look at the dugout of VV cricketers. They're all for a long time they're seeing that their team in the big final. They also doesn't want to miss the opportunity to lift this prestigious title. Exactly, सतीश। सबके चेहरे पर इस वक्त मुस्कान दिखाई देते हुए बैकफुट पर गए, गेंद को इस वक्त कट किया खूबसूरती के साथ, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 43 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। रात के इस वक्त 9:45 बज चुके हैं और घने अंधेरे को चीरते हुए इस वक्त फ्लडलाइट्स की प्रखर रोशनी मैदान पर गिरती हुई इस मैदान को चकाचौंध यहाँ पर करते हुए और इस फ्लडलाइट के रोशनी के तले यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला
की शानदार प्रगति होती हुई क्लाइमैक्स इस श्रृंखला का यहाँ पर प्रगति पर। और इस वक्त मुकाबला जारी है आर के स्ट्राइकर्स और वीवी वॉरियर्स के बीच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का खिताब अर्जित करने के लिए। अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज, ये गेंद बैकफुट पर गए, इस बार गेंद को पुल किया इनटू द गैप एज वेल, इट्स गॉन ओवर द फेंस एंड दिस टाइम इट्स गॉन ओवर द फेंस, जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर सिग्नल and it's a boundary. It fell just short of a fence at the widest long on area and the batsman got boundary for that. बेहतर स्ट्रोक यहां पर लगता हुआ श्रीनिवास पई के बल्ले से। शॉर्ट गेंद थी, थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाला और खूबसूरती के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर भेजने में सफल आफ्टर फर्स्ट बाउंस। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 47 रनों पर। इट्स 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। तो यहां पर अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट किया इस वक्त, खूबसूरती के साथ तो नहीं लेकिन कट जरूर किया और गेंद एक रन इस बीच मिलेगा। नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। गेंदबाज की गेंद कट करना चाहा, बैकफुट पर गए, चूके बेहतर गेंद थी, ऑफ कटर गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ हद तक डिविएट होकर अंदर की ओर आते हुए और इस बीच गेंद स्ट्रोक्स खेलने में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। 48 द स्कोर बोर्ड इज इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज सौरभ भक्ता गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और अगली गेंद, इस बार गेंद तक पहुंचे, गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, एक रन मिलेगा, निशाना चूक चुका है, थ्रो को रिसीव नहीं कर सके, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, इन कम्स थ्रो, दिस कुड बी एक्लोटाइज्ड, लेकिन यहां पर अंडरआर्म थ्रो किया था, बैकहैंड थ्रो सीधे स्टंप्स को बिखेर कर ले गया। और अब अंपायर श्रीनिकेत ने थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया है। सो जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी। जब विकेट चटकाए गए थे, गिल्लिया बिल्स डिस्टर्ब हुए थे, तब क्या बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं? दैट इज द मेन क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स एट दिस सिचुएशन। तो दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपनी टीम का मनोबल इस वक्त बढ़ाते हुए और इस बार पहुंच चुके हैं, नॉट आउट घोषित और सब कुछ सही सलामत इस वक्त बल्लेबाज के लिए। और 2 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और इन 2 रनों के साथ द 50 कम्स अप फॉर वीवी वॉरियर्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज इस ओवर में अंतिम बार सौरभ भक्ता अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद पटकी विकेट, इस बार स्कूप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, कवर पॉइंट की फील्डर सिर के ऊपर से, एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन मिल चुका है, तीसरा रन लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े हैं, थ्रो पहुंचा, काफी धीमा थ्रो, स्ट्राइक रन पर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। Absolutely fantastic running between the wicket. Just played that one, just scooped that one, square of the wicket down to a cover point, and gets in 3 runs for that. And that 3 runs, the scoreboard moving up to 53 for the loss of 4 wicket after completion of 6 overs. 6 ओवर की समाप्ति। और सतीश 3 ओवर में 30 रन थे, उसके बाद बेहतर कमबैक किया गेंदबाजों ने आर के वॉरियर्स के 2 ओवर में, लेकिन इस ओवर में कुछ ज्यादा रन बने और अब कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 53, 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंतिम ओवर बाकी, तो अंतिम ओवर में जैसा कि वीवी वॉरियर्स के कप्तान ने कहा कि 70 का आंकड़े तक उनको पहुंचना है, लेकिन यहां पर 60 का आंकड़ा भी अगर वो पार कर जाते तो इन हालातों में अंडर दिस कंडीशन इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिटिव टोटल। Absolutely, Gopi. They got a 53 in 6 overs and one last over remaining. And I want to see the which bowler is going to bowl that last over. And I think Sandy is got a ball in his hand. The very interesting move because the 2 bowlers can bowl 2 overs each, I think. And I think that just wanted to see why the 2 bowlers, I think, is a completed 2 overs, I think so. That's why they need to bring one new bowler to bowl that last over. That's why the captain of RK Strikers wanted to Sandy to bowl that last over. Not a lot of responsibility in the shoulder of Sandeep Gopi because you need to restrict at least at least by 60 runs. Within 60 runs because the opposition team has got a good bowling department and that's so important for RK Strikers to restrict the opposition less than 60.
एग्जैक्टली सतीश, पहली गेंद बॉटम एज, गेंद सीधे पहुंची ही विकेट कीपर के हाथों में। 30 मिनट स्टिपुलेटेड टाइम उनके समाप्त हो चुके हैं और एक ओवर इस वक्त वो पीछे हैं। तो 31वां मिनट उनके कोटे का यहां पर चालू हो चुका है। तो 5 गेंदें अभी भी फेंके जाने बाकी हैं और देखते हैं कितने ज्यादा मिनटें यहां पर वो लेते हैं अपने कोटे के 7 ओवर को पूरा करने के लिए। गेंदबाज संदीप उर्फ सांडी अपनी ओवर की अगली गेंद, यह गेंद इस बार धीमी गेंद को खेल दिया मिड ऑफ पर, थोड़ी सी मिसफील्ड और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े यहां पर और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। सो कपल ऑफ रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 55 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 55 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। Still in overall calculation, it's going to be 4 balls remaining in their innings. 55 the score for losing 4 wickets. संदीप अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, फुल लेंथ गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। That was an absolutely sloppy. मैं यहाँ पर मॉनिटर पर देखना चाहूंगा actually what was happened there. ये गेंद को इस वक्त डिलीवर किया था, गेंदबाज ने गेंद को ड्राइव किया और अंतिम क्षण में वहां पर गेंद तक पहुंच नहीं पाए फील्डर। तो जहां तक सवाल है, फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है लॉन्ग ऑफ पर फील्डर थोड़े से सीधे थे, उन्होंने गेंद तक पहुंचने का प्रयास किया लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंचने में सफल। 59 रन बन चुके हैं, 59 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक atmosphere we are just observing in this ground. This is an absolutely फेस्टिवल एटमॉस्फेयर कहा जा सकता है, त्योहार का माहौल इस मैदान पर छा चुका है। इस पैंथर्स सुपर लीग 2023 मेगा श्रृंखला के अंतर्गत संदीप इस बार फुल टॉस, गेंद को हल्के से खेल दिया, इस वक्त गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पर इनकंसिडर थ्रो, दिस कुड बी ट्रबल, दिस कुड बी इन ट्रबल एंड अप गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर। तो दूसरा रन न लेना चाहता जो कि काफी जोखिम भरा साबित हो सकता था और हुआ भी। और इससे पहले कि स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ एक्स्ट्रा कवर फील्डर का गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट यहां पर विकेट दिए। तो देखिए किस तरीके से यहां पर हल्के से गेंद को पुश किया था, 2 रन लेना चाहते थे, वो जानते हैं फील्डर काफी पीछे तैनात है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। पहला रन तेजी के साथ पूर्ण किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन इससे पहले कि बल्लेबाज पहुंचे नॉन स्ट्राइक रेट पर सीधा थ्रो पहुंचता हुआ विकेट गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट यहां पर चटका दिए। तो 6.4 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है। 59 for the loss of 5 wickets, 6.4 overs gone in there, just two deliveries left. और देखते हैं इन बचे हुए 2 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार संदीप। तो the new man is now comes out to the middle at the non-striker end, number 7 batsman संदीप अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, खेल नहीं पाए, पैरों पर गेंद टकराई, पॉइंट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा एंड विद दैट सिंगल द स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 61 now for the loss of 5 wicket and just a last ball remaining in the innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी, the last ball now remaining in the innings। और देखते हैं इस अंतिम गेंद में वीवी वॉरियर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। अगली गेंद लेकर उनकी पारी की अंतिम गेंद लेकर सैंडी तैयार। यह गेंद इस बार उछालना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में, रन के लिए दौड़ पड़े, यह विकेट गिर चुका है और इसी के साथ their stipulated overs are completed and VV Warriors finished with 61 for the loss of 6 wicket after the completion of their 7 overs। तो बिल्कुल सही बात सतीश, 70 रन के आंकड़े तक पहुंचने की बात की थी VV Warriors के कप्तान ने। तो यहां पर जो बात उन्होंने की थी उससे 9 रन उनकी टीम कम बना पाई और यहां पर बेहतर कमबैक मैं समझता हूं आरके स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने की है। पहले 3 ओवर में 30 रन प्रदान करने के बाद इन द सेकंड हाफ ऑफ द गेम दे कम बैक वेरी वेल एंड कंसीडर्ड जस्ट 31 इन द नेक्स्ट 4 overs and capturing 5 wicket wickets of VV Warriors and this is an absolutely fantastic comeback। 62 the target, just under 9 runs per over they have to score for victory to clinch the prestigious पैंथर्स सुपर लीग टाइटल। और देखते हैं 62 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो किस तरह की रणनीति यहां पर अपनाते हैं। Institute of
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. MS Pi and Company, and thank you very much, sir, for your cooperation. Akriti Digitals, one of the main sponsor of this cricket tournament. Thank you very much for your cooperation. Sri Mahamaya Traders, the proprietor. Thank you very much for your cooperation. We have Vijay Masala, the proprietor of Vijay Masala, cooperated for the success of this cricket tournament. Royal Groom, the proprietor T. Ganesh, Royal Groom, they cooperated for the success of the cricket tournament. We have T. Ganesh Pai is sponsored for this cricket tournament, and we have Manela Annapanayak, who is sponsored for the success of this cricket tournament. We are coming back to the lot of names of the donors after a little short break, and now it's a time for a change in commentary box. I would like to invite Ajay Raj for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you very much. थैंक यू सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार श्रृंखला जो कि द्वंद्व से बढ़ती हुई इस छोर से ये गेंद स्टंप के लाइन पर थी, थोड़ा सा विकेटों को कवर किया, धीरे से हल्के हाथ से गेंद को पुश कर दिया, रन आउट का मौका शायद बन जाए, लेकिन अंपायर थोड़ा सा सोच में पड़ गए और आखिरकार उन्होंने संकेत किया कि तीसरे अंपायर को ये जिम्मेदारी सौंपनी होगी कि आखिरकार क्या हुआ है, और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। इस वजह से श्रीनिकेत जी ने तीसरे अंपायर को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो साफ साफ देखते हुए बता दें कि आखिरकार बैट्समैन क्रीज में पहुंच गए या रह गए। 62 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का, और ऐसे में कितना संघर्ष देखने को मिलेगा। So in this break, once again, I would like to thank the donors who are the sponsor for the success of this cricket tournament. Some names: C. A. Subramaniam, Kamat Caterers, we have Aruna Masala, Avenis, we have Faisal Suzuki, Enjoy, KE Kenjar Enterprises, Maruti Engineering Company, Nilesh D. Kamat, K. Gurudatta Bhagavat, and thanks to CA Jagannath Kamat, thanks to Pet Choice. Not out, not out. अंपायर ने कहा कि नॉट आउट है, तो and thanks to PSB Vegetables, and thank you very much on and all who are contributed heartily for the success of the cricket tournament. Coming back after a short break. Thank you. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीश गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। इस छोर से उनकी गेंद हमसे दूर जाते हुए अश्वत के लिए गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, थोड़ा सा पीछे करते हुए गेंद के ऊपर गए और
बहुत लंबाई ज़्यादा थी, उस गेंद को थोड़ा सा दबा देने के अंदाज में पुश भर कर दिया बैट्समैन ने। 1 रन के साथ ही कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 2 पर बगैर किसी नुकसान के। आर के स्ट्राइकर्स के कप्तान ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला, गेंदबाजी का फैसला और कितना सही या गलत आने वाला समय बताएगा इस पशोपेश में कि आखिर शुरुआत में क्या करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। ओद विकेट इस छोर से ऑन साइड पर पुल कर दिया है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक है, फील्डर के पास से दूर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये 4 रन। कमाल का चौका और इस शानदार चौके के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। वरुण शानबाग का एक करारा स्ट्रोक, टप्पा खाने के बाद जैसे उछल कर आई उसको खूबसूरती के साथ ऑन साइड पर मिड विकेट की दिशा में पुल कर दिया बैट्समैन ने वरुण ने और इस चौके के साथ कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा चुके हैं 6 पर बगैर किसी नुकसान के, 6 विदाउट लॉस। और लक्ष्मीश इस छोर पर गेंद को लेकर योजना बना रहे हैं, बिल्कुल अंपायर के थोड़ा सा पीछे 2 कदम पीछे खड़े रहते हुए क्रीज के कोने से शायद वो गेंद को करने के लिए तैयार हुए। उनकी गेंद ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ थी, बैकफुट पर गए, गेंद को सिरा दे दिया, बल्ले कर निचला सिरा देकर गेंद को फिसलने दिया। जब तक पॉइंट में फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाते आसानी के साथ 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन को मिलेगा। रन बढ़कर 7 पर, अच्छी शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन। हालांकि सारे फील्डर्स इस वक्त बहुत ही मुस्तैद दिखाई पड़ रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या रिजल्ट उनके फेवर में आएगा देखने वाली बात है। इस छोर से ये गेंद लक्ष्मीश की, अश्वत्थ स्ट्राइक एंड पर उनके लिए गेंद और शरीर से जी हां दूर गेंद खेल दिया गेंद को। हालांकि पहले विकेट को कवर कर लिया था अश्वत्थ ने, स्टंप्स के लाइन पर थी और फिर देखा कि गेंद उनकी तरफ आ रही है, फिर अचानक बल्ले को लाते हुए गेंद को धीरे से उन्होंने ऑन साइड की दिशा में पुश कर दिया। 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 8 पर, जबकि कोई विकेट अभी नहीं गिरा है। लक्ष्मीश प्रयास जारी कि वो बैट्समैन को परेशान करें। लक्ष्य जैसा कि आपने देखा कुल मिलाकर 62 रनों का, और 62 रनों का लक्ष्य जिसमें पावर प्ले काफी निर्णायक महत्वपूर्ण है। ऑन साइड पर बहुत जबरदस्त स्ट्रोक के साथ गेंद को उछाल दिया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए। वरुण मानो आज माइंड सेट करके आ चुके हैं, कमर कसकर आ चुके हैं कि वो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। फुल टॉस गेंद थी और लक्ष्मीश की गेंद मानो उनको एक पुरस्कार ही दिया गया हो। उन्होंने खूबसूरती के साथ बस ज्यादा कुछ नहीं करना था, गेंद को दिशा भर देना था, घूमकर ऑन साइड की दिशा में मिड विकेट की दिशा में उन्होंने स्कूप और पुल का मिला जुला स्ट्रोक खेल दिया, गेंद को एक दिशा भर दे दी 6 रनों के लिए। और इस छक्के के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। So thank you very much. We're coming back to the names of the donors. Special thanks to the MLA of Mangalore South, D. Vedabas Kamath, for the cooperation of the success of this cricket tournament. Zika, Z Institute of Creative Art, and Saukar Kiran Pai, Ladle Petrol Pump, Youth of GSP Worldwide, Origin, and United, and thanks to Professional Courier, other end of this the bowling end, and Homeland Holidays, and we have Charvi, DVK, Forever Productions, Giri Manjas, Tandoor Express, we have HR Prabhu, Royal English High School, Bangalore, and we have a proprietor of Machli, who has contributed heartily for the success of this cricket tournament. Madhukar Ramdas Kamath, Gautam Shenai, Marur Ajit Pai, Yajwan Pai. We are coming back to the more names after the shot. ये गेंद उस छोर से और इस बार गेंद के ऊपर आकर गेंद को धीरे से अश्वत्थ ने पुश भर कर दिया, 1 रन तेज कदमों के साथ चुरा लिया। रन बढ़कर 15 पर सूरज आक्रमण पर आ चुके हैं। प्रोफेशनल कोरियर छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने इस वक्त बैट्समैन वरुण शानबाग, जिन्होंने कमाल का स्ट्रोक 2 पिछले ओवर में खेला और निश्चित तौर पर वो साबित कर रहे हैं कि वो अब कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रहे हैं गेंदबाजों के लिए, और उनका बल्ला अगर बोलता रह गया तो निश्चित तौर पर अच्छे खासे रन बनेंगे। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा पीछा किया, गेंद को कट करने का प्रयास किया, चूक गए पूरी तरह से। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। रन सभी भी 15 पर बगैर किसी आघात के नुकसान के, जबकि लक्ष्य 62 रनों का है और ये दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर है। सूरज योजना बना रहे हैं कि वो किस तरह से बैट्समैन वरुण को, पिछला ओवर उन्होंने देख लिया था कि वरुण किस तरह से आक्रमण करते हैं और इस वजह से ऑफ स्टंप के लाइन के आसपास गेंद को करते हुए इस बार थोड़ा सा तिरछा खेल दिया ऑफ साइड पर,
और गली क्षेत्र में गेंद गई, जब तक फील्डर गेंद को उठा ले आसानी के साथ दोनों बैट्समैन छोर को बदल चुके हैं और इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 16 पर बगैर किसी नुकसान के आघात के। दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन अक्सर हम कहते हैं गेंदबाजों के लिए काफी खलल पैदा करती है और यही हो रहा है। अश्वत और वरुण जो कि इस वक्त बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी बनाकर उतर चुके हैं कि वो शुरुआत में किस तरह से रनों को बनाएंगे। राउंड विकेट ये गेंद अश्वत को, बहुत अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर करते हुए अपील कर रहे हैं जोरदार, लेकिन इस पुरस्कार को जी नहीं, इस अपील को क्या पुरस्कार मिलेगा? अंपायर ने इस अपील को साफ साफ नकार दिया, खारिज कर दिया। रन 16 पर है बगैर किसी नुकसान के। बहुत अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के लाइन के आसपास, जिसको थोड़ा सा फ्रंट फुट पर खेलने के प्रयास में चूक गए। रन अभी भी वहीं पर स्थिर। राउंड विकेट उस छोर से सूरज की गेंद स्टंप्स के लाइन पर, थोड़ा सा परिवर्तन था, इस बार दिशा परिवर्तन करते हुए गेंद को थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आए, लेकिन उसको बहुत जल्दी पड़ते हुए बैट्समैन ने गेंद को पैर को थोड़ा सा विकेटों को कवर करते हुए ऑन साइड की दिशा में गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया। 1 रन के साथ रन बढ़कर 17 पर पहुंच चुका है बगैर किसी नुकसान के। 17 विदाउट लॉस और वरुण अब स्ट्राइक एंड पर आ रहे हैं। स्ट्राइक जितना रोटेट होगा मुझे लगता है कि लय प्राप्त होगा, फ्लो प्राप्त होगा, मोमेंटम मिलेगा और फिर कहीं ना कहीं आक्रमण किया जा सकता है। ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर थी और अंपायर ने, जी हाँ, निश्चित तौर पर वाइड गेंद थी, ज्यादा बाहर। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 18 पर बगैर किसी क्षति के आघात के। 18 विदाउट लॉस और सूरज जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं वेरिएशन लाने का, उसमें वो थोड़ा सा विफल हो रहे हैं क्योंकि कुछ एक गेंदें दिशा से बाहर निकलती हुई जिसकी वजह से अतिरिक्त रन बने। जबकि उस छोर से, प्रोफेशनल कोरियर छोर से, सूरज की गेंद दोबारा ऑफ स्टंप किया, ज्यादा बाहर गई और रीच करने का प्रयास जरूर कर गए। वरुण पहुंच नहीं पाए, लेकिन अगर पहुंचते भी तो मुझे लगता है कि शायद पुरस्कार वैसे भी दिया जा चुका है। 1 और रन बढ़कर पहुंच चुका है 19 पर, 19 रन बगैर किसी नुकसान के। तो योजना यही है कि बैट्समैन वरुण को ऑन साइड पर या मिडल और लेग स्टंप पर न दे गेंद को, ताकि वो आक्रमण करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें वो विफल हो जाए। ऑफ स्टंप के बाहर बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद को कट कर दिया, लेकिन इस बार फील्डर ने गेंद को उठाकर नॉन स्ट्राइक एंड के दिशा में थ्रो कर दिया। बहुत शानदार फील्डिंग है। हालांकि ऐसा लगा कि कुछ देर के पहले कैच था, जी हाँ, और उस प्रयास में विफल हो गए। इस प्रकार बैट्समैन 1 रन को पूरा कर चुके हैं। इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 20 रन बगैर किसी नुकसान के। आप देख रहे हो शानदार पैंथर्स सुपर लीग 2023। तो संघर्ष अभी चलता हुआ और आरके स्ट्राइकर्स 62 रनों का पीछा कर रहा है, जबकि वीवी वॉरियर्स के गेंदबाज रोकने का प्रयास कर रहे हैं। Thank you very much once again. Coming back to the names of the donors, we'd like to give special thanks to Munkur Ramdas Kamath, Gautam Shanai, Marur Ajit Pai, J.R. Lobo, ex-MLA Mangalore South, GS Home Products Mangalore, Ajwant Pai, Sri Durga, Laborator Kashit, and Prasad Kumar Shivaganga Milk Parlor, Dr. Prabha Kamath Hundi, Krishnanand Pai Dubai. We have Pratingya Caterers. We have Sri Veera Venkatesha Beverages, Ramesh Kamath Balalbag, Sridhar Pai Mahamaya Distributors. Thank you very much for all the donors Thank for you. your contribution. Thank you very much. तो रामकृष्ण आक्रमण पर हैं और आपको याद दिला दें 30 मिनट का टाइम दिया गया है, जिसमें आपको 7 ओवर समाप्त करने हैं और इस पर ध्यान देना होगा। रामकृष्ण आक्रमण पर तैयार, वरुण उनके सामने, लेग स्टंप के बाहर थी और इस गेंद को अगर वो जाने देते तो शायद बात बन सकती थी, शायद वाइड हो सकता था, लेकिन वरुण एक फ्लो के साथ खेल रहे थे, जिसकी वजह से इस गेंद को भी ऑन साइड की दिशा में पेडल स्वीप के अंदाज में थोड़ा सा घुमाकर खेलने का प्रयास उन्होंने किया और बल्ले से लगकर गेंद 1 रन लेने का अवसर, रन बढ़कर 21 पर और अश्वत स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। दोनों बैट्समैन कितनी बड़ी भागीदारी वो बना पाएंगे। इस छोर से रामकृष्ण 77 नंबर के जर्सी में गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। अश्वत ने विकेटों को पूरी तरह से कवर कर लिया। इस छोर से ये गेंद ऑफ द विकेट, फुल टॉस बनाकर गेंद को खेल दिया। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद जा चुकी है। बल्ले का मुंह खोलते हुए सीधे बल्ले से थ्रू द लाइन गेंद को खेल दिया। जब तक फील्डर गेंद को उठा ले आसानी के साथ बैट्समैन 1 रन को पूरा कर चुके हैं। रन बढ़कर पहुंच चुका है 22 पर बगैर किसी नुकसान के, 22 विदाउट लॉस। और रामकृष्ण की अगली गेंद
योजना बना रहे हैं कि आखिरकार बैट्समैन को किस तरह से फांसा जाए और इस योजना में क्या वो सफल हो पाएंगे, क्योंकि ब्रेक थ्रू जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है गेंदबाजी की टीम के लिए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर घुमाकर खेलने का प्रयास, हवा में फील्डर गेंद के नीचे आ गए, लेकिन इसके बावजूद गेंद उनके हाथ से छूट गई है। मौका मिला वरुण को एक और, भाग्यशाली रहे। गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेलने के प्रयास में गेंद हवा में तैरती हुई गई और बैकवर्ड स्क्वायर लेग में डीप में फील्डर ने गेंद को कैच करने का प्रयास किया। गेंद तक पहुंचे जरूर, गेंद उनके हाथों में भी आई, लेकिन अचानक गेंद उनके हाथ से छूट गई और वरुण जो हालांकि काफी परेशान हो गए थे लेकिन बच गए। बाल रन्स बढ़कर 23 पर अश्वत्थ स्ट्राइक एंड पर हैं और रामकृष्ण। हालांकि जब भी ऐसा होता है कि अच्छी गेंदों पर विकेट नहीं मिलता है तो गेंदबाज थोड़े से परेशान हो जाते हैं। यही हुआ, क्योंकि जब इतनी जीतोड़ मेहनत करने के पश्चात जब विकेट गिरने की संभावना बनती है और कैच हाथ से छूट जाए तो क्या निश्चित तौर पर दबाव बन जाता है गेंदबाजों पर। इस छोर से ये गेंद इस बार दोबारा अश्वत्थ ने फुल टॉस बनाकर पूरी तरह से लाइन पर आ रहे हैं। गेंद के मेरिट पर वो खेल रहे हैं। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक ऑन साइड की दिशा में लॉन्ग ऑन पर खेल दिया। गेंद को 24 रन बन चुके हैं और कोई आघात क्षति अभी नहीं हुई है, यानी कि दोनों बैट्समैन ये योजना बनाकर आ चुके हैं कि उनको कोई विकेट को अभी नहीं खोना है और अगर वो सिंगल्स डबल्स को बटोर कर भागीदारी बनाते हैं तो आगे स्लॉग ओवर्स में वो आक्रमण कर सकते हैं। इस छोर से रामकृष्ण की गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद थी। ऐसा ही गेंदें निश्चित तौर पर बैट्समैन को परेशान कर जाती है। वरुण ने इस बार गेंद को जाने दिया, हालांकि वो समझ नहीं पाए, बस देखते रह गए। गेंद टप्पा खाकर थोड़ा सा डिवेट होते हुए, स्विंग होते हुए, हवा में फ्लोट होती हुई घूमकर विकेट कीपर के पास गई, थोड़ा सा विकेटों को छोड़कर बाहर की तरफ निकल गई और इस गेंद को देखकर बैट्समैन बिल्कुल इत्मीनान के साथ उन्होंने जाने दिया। वो छोटा गेंद एक और बहुत ही कमाल की गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को। क्या बात है, रामकृष्ण ऐसी गेंदों को कहां पर छुपा कर रखते हैं। बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने गेंद किया और बैट्समैन थोड़ा सा फ्रंट फुट पर खेलने के प्रयास में चूक गए, बीट हो गए और मानसिक तौर पर अगर कहा जाए साइकोलॉजिकली वो थोड़ा सा परेशान हो गए। रन्स 24 पर बगैर किसी नुकसान के, जबकि ये तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। अभी 4 ओवर शेष बचे हैं, 24 विदाउट लॉस और 4 ओवर अभी शेष बचे, यानी कि 24 गेंदों का खेल अभी शेष बचा हुआ है। कितना संघर्ष देखने को मिलेगा। So thank you very much, and once again coming back to the names of the donors, once again would like to give special thanks to Nityanand Bhakta, RK Associates, Kusum Caterers, Pallavi Caterers, Suman Kini Manipal, and we'd like to give special thanks to Vivek Traders proprietor M Naresh Chennai, Shankar Kini Manipal, Vivek Prabhu, Jairam Rao, Manjunath Sano. So we are really grateful and thankful for all the donors. We'd like to give special thanks to Abdul Latif of Port Ward Corporator for your cooperation for the success of this cricket tournament. And also we'd like to give special thanks to Mohammad Samsuddin, the corporator of Kudroli Ward. And thank you very much, sir, for your all cooperation for the success of this prestigious Panthers Super League 2023. And once again, we'd like to give special thanks and heartily thanks for all the donors for your cooperation for the success of this wonderful cricket tournament. Thank you very much once again. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 16 मिनट्स गुजर चुके हैं और फील्डिंग टीम को बता दें 30 मिनट का समय उनको 7 ओवर को समाप्त करने के लिए दिया गया है और उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, समय जो कि नष्ट न करें। 30 मिनट में 7 ओवर समाप्त होने, चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है। दूर वाले छोर से विघ्नेश आक्रमण पर आ रहे हैं और हार और जीत सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आखिरकार कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये देखने वाली बात होगी। दूर वाले छोर से विघ्नेश की गेंद अश्वत्थ को इस बार बैकफुट पर थोड़ा सा पीछे हटे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाते हुए उन्होंने गेंद को पंच किया। खूबसूरत स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई, जब तक फील्डर गेंद को समेट पाए आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। 25 रन बन चुके हैं, कोई विकेट कोई आघात अभी नहीं हुआ है और अश्वत्थ और वरुण जो कि आपस में बार बार बातचीत करते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब दूर वाले छोर से प्रोफेशनल कोरियर छोर से गेंदबाज आ रहे हैं, उनकी गेंद ओवर द विकेट विघ्नेश की इस बार ऑन साइड पर उछालने का प्रयास किया, जोरदार अपील कर रहे हैं विघ्नेश, लेकिन पुरस्कार नहीं मिलेगा।
क्योंकि आपका पाला जो अंपायर के सामने पड़े हैं, खड़े हैं, निश्चित तौर पर एक पाषाण है, ज्यादा कुछ असर ऐसे विचलित नहीं होते हैं, अनुभव से भरे हुए हैं। 25 रन बगैर किसी नुकसान के विघ्नेश प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से आज बल्लेबाजी में उन्होंने प्रयास किया, क्या वो गेंदबाजी में कुछ जादू कर दिखाएंगे। ओद विकेट, उनकी गेंद ऑन साइड पर लपेट कर खेलने के प्रयास में बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद गई कवर, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जा चुकी है। 1 रन लेने का अवसर मिलेगा। इसे के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 26 पर बगैर किसी नुकसान के। विकेट्स नहीं गिरे हैं, यही एक बड़ी बात है यहां पर आर के स्ट्राइकर्स को, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उसके लिए उनके लिए प्लस कहा जा सकता है। लेकिन रनों का जो औसत है वो का थोड़ा सा धीमा चलता हुआ। उस छोर से ये गेंद अश्वत सामने वाले उनके बिल्कुल सामने, विघ्नेश के सामने। इस बार विकेट कीपर ने गेंद को उठा लिया, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो तो जरूर हुआ, लेकिन बैट्समैन बाल बच गए। अगर स्टंप्स पर लगती तो शायद कहीं ना कहीं नजदीकी मामला हो सकता था। जोखिम भरे रन को चुराने का प्रयास, विकेट कीपर काफी फुर्तीले थे, गेंद को उठाकर उन्होंने नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया और 1 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर 27 पर। वरुण स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। विघ्नेश आक्रमण पर जारी है। अपने तरकश में कौन सा तीर वो रख चुके हैं, अब कौन सा तीर चलाने वाले हैं। उस छोर से उनकी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बीट कर गई, घुमाकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। टप्पा खाकर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और घुमाकर खेलने के प्रयास में बीट हो गया। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। 27 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर बगैर किसी नुकसान के आघात के। वरुण स्ट्राइक एंड पर उस छोर से ओद विकेट, ये गेंद बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद हवा में तैरती हुई दर्शक दीर्घाव में जाकर गिरी 6 रनों के लिए। एक और जबरदस्त स्ट्रोक और इस छक्के के साथ ही कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 33 पर 33 विदाउट लॉस, और इसी के साथ ये चौथा ओवर समाप्त हो चुका है। 33 रन बन चुके हैं, लक्ष्य 62 रनों का। और जिस तरह से आक्रामक स्ट्रोक्स वरुण लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो ठान कर आ चुके हैं कि किसी न किसी तरह से वो अपने टीम को जीत का स्वाद चखाएंगे। और इस बीच इससे पहले के 5 और शुरू माइक्रोफोन पर आगे का विवरण सतीश जी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया जिम्मेदारी को संभाले। विघ्नेश भट्ट और उनके जितने सारे साथीदार जिन्होंने इस श्रृंखला में आमंत्रित किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करते हैं। और आगे का विवरण सतीश जी से। थैंक यू वेरी मच। So thank you very much, Ajay Rajji, and we are coming back to the last session. Almost it's 3 overs which is remaining. It's going to be a very interesting 3 overs, Gopi, because it's a do-or-die situation for do-or-die situation for RK Strikers. They got 33 now, and that means another 29 runs required for the victory, Gopi, in 3 overs. And asking run rate almost 9.5 runs per hour, most probably. 9.66 runs per hour is the required run rate. It's achievable, Gopi, because they got all the wickets in hand, isn't it? They got all the wickets in hand. The one of these batsmen, definitely, the Varun Shanmugh is a key batsman because he's got a very good tournament from the bat. Having him in the middle, I don't think VV cricketers captain will go into relax here. They desperately wanted to send this man, danger man, Varun back into pavilion. The next ball hits that one towards the deep backward for a leg for a huge 6. Now I think his partner is joining the party. Ashwath Pai, what a tournament he's having, Gopi. He is the man who is changing the complexion of the game in the previous match when it's the 3 sixes which came from the last over, and now he's just continuing the right time, which is a big blow came from the bat of Ashwath Pai. And because of that 6, RK Strikers, they strongly back into this game. It's a 39 without loss of any wicket. Look at the spectators, outstanding, isn't it, Gopi? It's an electrifying atmosphere out here in this UCG cricket ground. Both the team supporters, they're supporting their teams. They're supporting their teams because they wanted their team to be in the... You need to see that your team need to get this big title of Panthers Super League 2023. They doesn't want to be the runner-up. They wanted to be the winner of this cricket tournament. But the battle is on. Job is not yet over from both the teams. They're definitely going to battle hard here. But that 6 will going to give a lot of oxygen for the battle. Here is the bowler, seaming away from us. Right arm over the wicket balls. This time wicket keeper behind the stamp is just celebrating. Why not? They've got the wicket of Ashwath Pai in the negation. Good comeback from the bowler's point of view.
Damodar is came into attack, got the punishment, but he's not lost his confidence. He's back strongly with the wicket-taking delivery. This is the kind of comeback which is required, isn't it? Isn't it for a bowler Gopi? It's outstanding delivery. After the big hit came from the bat, his ball little bit away going delivery. It's outswing delivery for the left-hand batsman, and outstanding comeback here by the bowler. Now the gate will going to open now for the VP cricketers as well because of that wicket. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर छक्का इस वक्त झड़ा था पिछले गेंद पर डीप बैकवर्ड और डीप मिड विकेट के बीच में, और उस छक्के के बाद स्ट्रेट अवे गेंदबाज प्रेशर में आ गए थे, लेकिन अपने दबाव को अगली गेंद में उन्होंने दिखाया नहीं और बिल्कुल सतर्क लाइन के साथ कुछ हद तक डिवेट होती हुई गेंद फेंकी, और यहाँ पर इस गेंद पर बल्लेबाज चकमा खा गए और अगली गेंद पर उनका विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 39 रन एक विकेट के नुकसान पर इस ओवर में कुल मिलाकर कितने गेंदे फेंके जा चुके हैं? 2 गेंदे, यानी अब कुल मिलाकर 16 गेंदे बाकी हैं, 23 रन चाहिए। 23 टू गेट फ्रॉम 16 डिलीवर्स, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन। और इस विकेट को प्राप्त करने के बाद जैसे कि आपने कहा सतीश, वीवी वॉरियर्स के लिए कमबैक करने का इस वक्त मौका जरूर इस वक्त खुल चुका है। Exactly, Gopi. Now with the new batsmen coming into the middle, I think it's the right time for the fielding team to tighten up the screws, because it's not so easy to come and throw your bat for every ball. For next ball, oh my goodness, wicketkeeper behind this time, they're missing that golden opportunity. It's going to be a one more wicket here for Damodar, but VB cricketers just missing that golden opportunity. Wicketkeeper behind this time, little bit excited, isn't it? Just I want to see that what kind of mistake is done. Oh my goodness, a late reaction to grab this catch in the negation. Ball just hitting his palm, and then ball slipping out of his hand, and the batsman crossed off for single. 40 for the loss of 1 wicket. Disappointment here for Damodar, and he's seaming away from us. Right arm over the wicket. Oh, this time it's a huge one. This is a big fish in the net here for VB cricketers. Look at the supporters of VB cricketers. They know exactly. They got a big wicket. He's a man. He's got a potential of changing the complexion of the match. And Varun Shanbag, the danger batter, is back into pavilion, and Gopi back-to-back 2 wickets. Almost is a 3 wickets if the wicketkeeper able to take the catch in the previous delivery. But this one, absolutely a big fish in the net. एब्सोल्युटली सतीश, दिस इज द बिग फिश इन द नेट। बड़ी मछली इस पर जाल पर फंस चुकी है, और वरुण शानबाग का इस मोड़ पर विकेट गिरना निस्संदेह बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकता है आरके स्ट्राइकर्स के लिए। तो क्योंकि वरुण शानबाग के ऊपर काफी उम्मीदें लगाई गई थी यहाँ पर, और वरुण शानबाग एक ऐसे बल्लेबाज है जो मैच फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ पर स्ट्रोक्स खेलने में कुछ हद तक चुके थे। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद थी और गेंद पर छेड़ता नहीं करना चाहा। इट्स गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की यहाँ पर, और विकेट वरुण शानबाग का गिर जाने के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा वीवी वॉरियर्स आर नाउ लुकिंग ऑन टॉप। Absolutely, they're looking on top, but you can't underestimate this man. Saurabh Bhakta just came into middle as the next ball is nicely driven down to short cow point. He's and captain of the VB cricketers. The fields the ball, Lakshmish, and ample time for Saurabh Bhakta to complete a single. Saurabh Bhakta, he's played a very good innings for his team in the previous match, isn't it? He got the ability of changing the complexion of the match, and wait and see how he's going to handle the pressure in this the under pressure situation. So far, Damodar bowled very well. 2 wickets in that over as he bowls right arm over the wicket to the right hand batsman. This time again nicely turns that one down to mid wicket region for a easy single, running hard for the second. In comes the top of the deep. Total mix up. Saurabh Bhakta has to walk back to the pavilion. This time I think RK Strikers doesn't want to lose this man in this passion. No one would like to go to the pavilion in this passion, Gopi, because Saurabh Bhakta is charging for the second. Would you think that is a mistake of Saurabh Bhakta? Would you think that's a mistake of the non-strikers? I think it's a mistake of non-striker, because Saurabh Bhakta is running towards a dangerous end. He is the one is running towards a danger end, but not really that much of support coming from the non-strikers, and but losing Saurabh Bhakta means RK Strikers definitely there onto the back foot. 42 for the loss of 3 wickets. Still they have to get another 20 runs to win this match. Over which is completed. 4 overs completed. 5 overs completed. 2 overs remaining. 12 balls remaining, excluding wides and no balls, and they have to get 20 runs to win this match. But
Gobi, the match is not yet over. 10 runs per over is a required and it's manageable, especially in a present cricket. You can't underestimate the batsmen's what RK Strikers has got. But I think Gopi, the VB cricketers definitely going to be very happy to see that they got up 3 valuable wickets in that previous over. एग्जैक्टली सतीश, 3 विकेट पिछले ओवर में गिर जाने के बाद स्ट्रेट अवे दबाव इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर, और देखते हैं बल्लेबाज इस वक्त क्या करते हैं। और इस बार गेंद को पुल किया, और जैसा कि सतीश आपने फरमाया था 20 रन्स आर मैनेजेबल इन 2 ओवर्स, क्योंकि आज का क्रिकेट का दौर बदल चुका है। आज अगर 2 ओवर में 40 रन भी बनाने होंगे तो यह कहा नहीं जा सकता है कि मैच हारती है 40 रन बनाने वाली टीम। तो यहां पर 20 रन बनाने, और ये जो छक्का यहां पर लग चुका है, निस्संदेह आरके स्ट्राइकर्स को इस मैच में वापस ला चुका है। तो यहां पर सवाल उठता है सतीश, दबाव का, द प्रेशर, और जो प्रेशर इस वक्त बिल्डअप हो रहा है, जो दबाव को जो झेलेगा वही इस मैच में विजय दर्ज करेगा। और यहां पर दबाव को झेला है, पहली गेंद पर छक्का लगा चुके हैं बल्लेबाज, और देखना यह है कि अगली गेंद पर किस तरह गेंदबाज यहां पर कम बैक करते हैं। Exactly, Gopi, the handling the pressure is so important. Lovely shot again, driven down to deep long on region, but not more than a single. And Gopi, I'm very surprised that the reaction of the batsman is that the batsman hits the 6. Vinayak Pai. It's not so easy, Gopi, because it just came into the middle, but he hit that ball against one of the best bowler of the side, Vignesh Shanai Karkala. He's got a fantastic tournament from the ball, but he's also surprised seeing that reaction there from Ashwat. Pulls that one beautifully down to deep backward square for a U6 and open the gate for RK Strikers again. Chip that one. Ball is in there. Longer fielder will going to take the catch here, and he completed the catch as well. Karthik is back into pavilion. Karthik is the batsman, is back into pavilion, but nothing much bother about the wicket, Gopi. They got 6 wickets in hand. The wicket will not going to be the big difference in this particular situation. But I think a dot delivery. They got the wicket. They got the wicket means they lost one delivery, Gopi. That might be the important in this situation, not the wicket. But here is a 49 for the loss of 4 wickets. Still they have to get another 13 runs to win this match. And the deliveries remaining 9 balls and 13 runs is going to be anybody's game. एब्सोल्युटली सतीश, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया विकेट गिर चुका है, लेकिन उसके साथ साथ एक डॉट गेंद भी हो चुकी है, और छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर सेंसिबल क्रिकेट अपनाना चाहिए था। इस बार पैरों पर टकराई, अप गोज द फिंगर, वन मोर विकेट फॉलन एंड द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग. It's 49 for 3 at one stage, 49 for 4, and now it's 49 for 5. So 8 balls remaining, 13 runs to get. और मैं समझता हूँ सतीश, वीवी क्रिकेटर्स के गेंदबाज इस ओवर में कम बैक कर चुके हैं. Absolutely, Gopi. Comeback means in the sense after hitting the 6, he made a comeback, isn't it? Just like what Damodar did in the previous over. After hitting that one, hitting the 6, the 2 wickets is taken. Here is also Vignesh Shanai is making a strong comeback here. This is the beauty of cricket, Gopi. That's why we are always telling that the cricket is game of glorious uncertainty, and this is a perfect example of that uncertainty. Sometimes it looks like RK Strikers are strongly back at this game, and sometimes it looks like VB cricketers strongly back at this game. Once again, the match stands where it's very difficult to predict which team will going to become the champion. Hat-trick ball. Oh, beautifully bowled. Right on the block hold. Negotiated very well by the batter, new batter in the negation to pick the single. Sensible batting from Sandy. 50 comes up. 50 comes up here for RK Strikers. That means 12 more runs required for the victory in remaining 7 balls. What a match. This is the kind of final you wanted to see, Gopi. This is the kind of final that all spectators wanted to see. This time going for the big swing of the bat. Ball is in the air. Appeal for the caught behind. Going up. They're checking for the run out. Overthrow comes into play. In comes the throw from the deep. Chance of run out in the non-strikers. And oh my goodness, it's a disaster. Leg by call by umpire. The wicket keeper celebrating. It's, I think, too smart. It's too smart, isn't it? But too smart from the batter, I think so. Because if they're going, wicket keeper goes on appealing, but there goes on running between the wicket. And we got a valuable 2 runs here. 52 for the loss of 5 wicket. Over number 6 completed. Last and decider over, which is the final over of this total tournament, is now going to start here, and this over will going to tell which team will going to become the champion, because 10 runs required from the last over. The match is evenly poised, Gopi.
एग्जैक्टली सतीश, द मैच इज नाउ इवनली पॉइज्ड। 2 ओवर में 20 रन बनाने थे, रिक्वायर्ड रन रेट था 10, और 1 ओवर में 10 रन बनाने हैं, अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 10। तो अंतिम ओवर में 10 रन बनाने हैं, और पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर जो 2 बहुमूल्य रन मिले हैं, उस 2 बहुमूल्य रनों की बदौलत अब लक्ष्य कुछ हद तक आसान, लेकिन मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है सतीश। और मैं कहूंगा एट दिस सिचुएशन इट्स नाउ also it's going to be a 50-50. Absolutely 50-50, but 50-50 go better. Seeing this bowler, I think it might be the 60-40 because a very good bowler. And just like we're talking about, it might be 60-40. That's what I'm mentioning. This is a one bowler is going to be almost in this particular tournament, Gopi, the very, very economical. He is the one, is a very, very economical throughout the tournament. Getting 10 runs in the last over, it's not so easy, but not impossible as well, Gopi. Needed some different technique to get that 10 runs. Now 5 balls remaining and 10 runs required for RK Strikers. This time again, look at that one. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Look at the delivery. The consistency of line runs, Gopi. So impressive from this man, Anantesh. Again, the pitching the ball in the right spot, getting some deviation, leg cutter in the relegation. 2 dotted deliveries, Gopi. Now, 4 balls, 10 runs required for the RK Strikers. Now it's a do or die situation here for RK Strikers. Exactly. What a splendid piece of bowling performance shown by the bowler in the last over. अनंत, और जहां तक सतीश अनंत का सवाल है, इस श्रृंखला में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है, और यहां पर रामकृष्ण, माफ कीजिए, गेंदबाज है, और उनकी गेंदबाजी की शैली ऐसी ही है जो कि बल्लेबाज को विचलित कर देता है। कब वो गेंद को सीधी फेंकते हैं और कब बाहर की ओर निकालते हैं, कहना मुश्किल है। यहाँ पर फ्लाइटेड गेंद बल्लेबाज को इनवाइट करते हैं टॉस करने के बाद कि वो खुलकर स्ट्रोक्स खेलें, और बल्लेबाज उस लालच में आ जाते हैं और कई बार बीट हुए हैं उनके गेंद पर। और यहाँ पर भी पहले 2 गेंदें उन्होंने ऐसे ही फेंकी थी, बल्लेबाज को ललचाया था कि वो खुलकर स्ट्रोक्स खेल सके, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद टिप्पा खाने के बाद घुमाव लेकर लेग कटर के रूप में बाहर की ओर निकली, और यहां पर बल्लेबाज वंचित हो गए। तो 2 गेंदें डॉट, बेहतर ओवर साबित हो चुका है। अब तक 4 गेंदें 10 रन चाहिए। अब ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, सिर्फ छक्का या चौका ही अब आरके वॉरियर्स को इस मैच में वापस ला सकता है। Exactly, Gopi Vinayak has got a potential of hitting that boundaries and sixes. This time across the line of the delivery, swinging that one down to mid-wicket, and then coming back to the second. In comes the throw from the deep. The batsman is struggling, but the throw is not up to the mark, and batsman cross off for a couple of runs. What a fantastic final is going here. 54 for the loss of 6 wicket. RK Strikers still they're not given up. Still that no, they are not given up. 8 required from 3 deliveries. Look at that one on the LED screen. Big LED screen. How many runs required? 8 required. How many balls remaining? 3 balls remaining. But Ramakrishna here, one of the best economical bowler. Now job is not yet over because they need to restrict 8 runs from 3 balls. Here is go. Right above the wicket. Swings that one. Missed it completely. What a fantastic piece of bowling there from Ramakrishna. Just I'm getting information, Gopi. He's the only one bowler has got an economy of less than 6. 5.2. 5.2 was going to be one of the best economies so far, Gopi, in this format of a game. Now, 2 balls remaining. And 8 runs required for the victory. 7 for tie. Decider delivery for RK. Needed at least the boundary in this ball. As Ramakrishna bowls. Bowled him. Clean him up. Now they're just started to dreaming of lifting this prestigious Panthers Super League 2023. Because last ball remaining. 8 runs required for the victory. 7 for the tie. 6 will not going to help RK Strikers to win this match. 6 will not going to help RK Strikers to tie this match. But needed 8 means the bowler has to do something stupidity by bowling no ball or white ball. No one can stop VV cricketers to become the champions of this Panthers Super League 2023. बिल्कुल सतीश, अगर अंतिम गेंद पर गेंदबाज को स्टूपिडिटी, जैसा कि आपने कहा मूर्खता, अगर गेंदबाज नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर वीवी वॉरियर्स चैंपियन रहेगा। लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, एक गेंद में 8 रन चाहिए, 7 रन बनाते हैं तो मैच टाई होगा, और इस वक्त गेंदबाज को फेंकनी है एक बेहतर गेंद जो जिसमें हालांकि चौका भी गिरता है तो कोई भी मायने नहीं रखता है, लेकिन इस वक्त उन्हें करनी है विकेट टू विकेट गेंदबाजी। और देखना है कि श्रृंखला के अंतिम गेंद में रामकृष्ण क्या करते हैं। Ramakrishna ball the final delivery of the tournament, and here is go. VV cricketers have become the champions of Panthers Super League 2023, defeating the opposition
strikers by 7 runs, and the celebration which is begins. Firework which is begins. What an outstanding tournament we had in this day and night of this cricket tournament. Thank you very much each and everyone. Thank you very much for the organizer for giving such a wonderful opportunity, being the part of this wonderful cricket tournament. The Panthers Super League 2023. Nothing to lose the heart here for RK Strikers. They also played a good game of cricket. They're not really given up. They tried their level best to become the champion. Winning and losing is a part of cricket, but both the teams are won the heart of cricket lovers. Congratulations, everyone. Thank you much. Thank you a lot. We would like to give special thanks to CS Chetan Nayak. Just we have forgotten the name in the donors list. CS Chetan Nayak. Thank you very much for your cooperation for the success of this cricket tournament. And we are straight away going into the post-match presentation ceremony. Till then, we are saying goodbye from the commentary box. Myself, Satish Salian in English, Mr. Gopi in Hindi, and of course, Mr. Ajay Raj in Hindi. Thanks to all the officials have done a great job for the success of this cricket tournament. I would like to give special thanks to the Cricket Heroes operator, done a fantastic job so far in this cricket tournament. Milind G1 Rai as a manual scorer. We have Nihal done a great job, and all the staff members under the great leadership of Manik, the V424x7 channel done a great job, and special thanks to Mahesh in the scoreboard as well, and all the officials. They are the responsible for the success of this cricket tournament. And in one word, we'd like to give special thanks to the organizer giving such a wonderful opportunity, being this successful cricket tournament, Panthers Super League 2023. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Panthers trophy end jalla आता तंशीची आमगेलंगा गेस्ट इल्ले सची सकाळांग हृदयपूर्वक धन्यवाद आजंग पवेलंका फर्स्ट सुरेश कामत धन्यवाद तशीची आमगेला सुरेश कामतेका आमगेला केदारान एक पूल देऊन स्वागत करता निमगुन घेता मंजुनाथ सानुमाका श्रेयस भट तानी पूल देऊन स्वागत करता म्हणून निमगुन घेता मंजुनाथ सानुमाम
जयरामराव नागेश जयरामराव मम्मागे तशी स्वागत करता तांकां नागेशान फूल दिवन स्वागत करपाक निम घेता. तशीच आमगेल्या गणेश किणीमाम आणि राज किणीमाम तांकां फूल दिवन स्वागत करपाक निमगून घेता. यज्ञवंत पै मम्मा काही तशी स्वागत करपाक निमगून घेता. सुमन किणी आणि शंकर किणी मणिपाल तांकां एका विघ्नेशान फूल दिवन स्वागत करता. डॉक्टर नित्यानंद भक्ता तांकां निखिलान फूल दिवन स्वागत करता. हुंडी प्रभा कामत मॅडम तांकां गजाननान फूल दिवन स्वागत करता. विवेक प्रभू तांकां अन्वितान फूल दिवन स्वागत करता. एक इव्हेंट ग्रँड सक्सेस जावपाक जाल्यार मेन बॅकबोन्स जावन तांणी सगळ्याक आमकां सपोर्ट केलेलो आसा तांकां सगळ्यांनी फर्स्ट एक क्लॅप मान स्वागत करता. तशीच एक ग्रेट इव्हेंट जावपाक जाल्यार बॅकबोन जावन कदने तुमी एक इव्हेंट कराची इव्हेंट केल्यार ताची म्हाका शाम्य आसाची म्हूण सांगून आमकां कदने सपोर्ट केलेलो तसो सुरेश अण्णान एक दोन्ही उत्तर उलोवप हांव निमगून घेता. तशी बेळ्ळलबाग रमेश कामत मामाकय आमगेल्या नागेशान फूल दिवन स्वागत करता. मस्त वेळ कारणा ऑलरेडी लेट जाला. एक अद्भुत एक टुर्नामेंट आज हांगा एंड जाल्ले. भारी लायक क्रिकेट सगळ्यांक मेळ्ळें. प्रती एक टिमाक तांगेले फुल्लेस्ट एफर्ट घाल्ला हें पळयतना कळटा. प्रती एक मॅच लास्ट ओवर थंय गेला आनी खंयचेय प्रेडिक्ट करूं जायनी तितले टफ फायट पुरा मॅचेस जाल्ला म्हळ्यार खुशये विशय. हें भारी एक संतोश जाता. फर्स्ट टायम रनर्स अप जावन आशिल्ले RK स्ट्रायकर्स हांकां अभिनंदन करता. लायक एक स्पिरिटेड क्रिकेट तांणी दाखयला. लास्ट मिनीट थंय तांणी फायट दिला. पुरा तांगेल्या मेंबर्साक कंग्रॅच्युलेट करता. तशीच विनिंग टीम वीर व्यंकटेश वॉरियर्स मंगळूरची टीम तांणी एकदम अद्भुत प्रदर्शन केला. प्रती एकल्यान तांणी तांगेले एफर्ट घाल्ला तांकां हांव अभिनंदन करता. तशीच आमकां हें ऑर्गनायज करतना पुरा आमगेले अंपायर्स अशे पुरो कॉमेंटेटर्स अशे पुरो V4चे लायव्ह अशे पुरो सगळ्यांनी सहकार दिलेलो आसा तांकांय अभिनंदन सांगता. तशीच हें डेडली पॅन्थर्स एक टीम यंगस्टर्सान उठकून स्टार्ट केलेलें. हें फर्स्ट टायम तांणी एक ऑर्गनायज करता आसत इतलो व्हड स्केलार ते यशस्वी जाला म्हणून सांगूक म्हाका भारी खूश जाता. आनी मुखार देव तांकां असले मस्त टुर्नामेंट करची शक्ती दिवो. तशी मस्त प्लेयर्सान भायल्या गांवांतून आयल्याची आनी तूं भागवयशिल्ला तांकांय देव बरें करो म्हणून हांव आतां हे 2 उतरां म्हगेल्या राबयता आनी मुखावेल प्रोग्राम करून दिवका म्हणून ऑर्गनायझर्स. तशीच आज सुरेश अण्णान म्हणलें म्हाका एक डेडली पॅन्थर्स आमी एक टीम बांदून आतां एक 15 वर्सां जाले लास्ट इयराक. त्या 15 वर्सान तो आमकां मस्त मस्त सपोर्ट मेळ्ळलो आसा. सगळ्यांकय मस्त थँक्स. सगळे मस्त प्लेयर्स आमगेल्या टिमांत खेळलेले आसा जी आजी कितें आसाची कदने आसता जी एज ऑलवेज टोल्ड डेडली वन्स अ डेडली इज ऑलवेज अ डेडली म्हूण घेवन. तशीच आमगे लुट्टू डेली आशिल्ले एक मोगाचे एक 2 जन प्लेयर्साक आमी स्वागत करपाक आमी लेखिल्लो आसा. तशी एक फर्स्ट जावन आमगेल्या अँडी अनंतराय ताणें घेवन ताका स्वागत करता आमगे गेस्टांचे कडेन. ताणें आमगे लुट्टू मस्त वर्स आमगे सन्मान करपाक निमगून घेता. त्या अँडीन आमगे लुट्टू मस्त वर्स आमकां कदने सपोर्ट जावन आमगेले वर्स कदने आशिल्लो एक मनीस तो आमगेलो मोगाचो पुरे जनांनी तांकां स्वागत करता सन्मान करता.
आमगेल अनेक प्लेयर आमगेल उट्टू अत्तय असतो आमगेल उट्टू कदने असतो आमगेल अर्चित शिवानंद ताणे येवका म्हणून निमगून घेता आमगेल तशी आमगेल अदिती लोकांनी अर्चिता काही तशीची सन्मान कोर कावंडी म्हणून घेता एक इवेंट ग्रँड सक्सेस जावक जाल्यार ताची मागशी डे एंड नाईट आमगेलो ड्रबून आमकां डे सपोर्ट केलो तसले अंपायर कमेंटेटर्स स्कोर बॉक्स स्कोर चेंज करता तांचे कडेन एक पटी स्टेजार येवन आमगेलो अतिथी लागीं ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಲ್ಕೊಂಡು ಮುಂಗೆತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕೋರರು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೋರರು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅಂಪೈರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀನಿಕೇತ್ ರಾವ್, ರಾಜೇಶ್ವರ್, ವಿರಾಜ್, ರಾಜರತನ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿರಂಜನ್, manual scorer Nihar Amin, online scorer Milan Jeevan, commentators Satish, Gopal, Ajay Raj, groundsman Mahesh Kumar, तशीची सुपर लीग अंतू मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड आम्ही कोणाके दिलेलं ना त्यात आम्ही दिवतसाची VV क्रिकेटर्स वर्सेस मंगळापुर ताजे मॅन ऑफ द मॅच विघ्नेश शेणै कारकाळ, तशीची KSK वर्सेस उल्लाल मॅच जालेलो आसा लीगाचे लास्ट मॅच तांकां पद्मनाभ हाफ सेंचुरी मारून तांकां मॅन ऑफ द मॅच दिव पद्मनाभ पै KSK टीम आदुकोनु ताणे 50 मारलेलो आसता जी आयची टोर्नामेंटाचंतू एकल्यानं मारलेलो इंडिविजुअल 50+ स्कोर. सेकंड लीग मॅच सप्तमी वर्सेस GSB योधा ताजे रतन कामत मॅन ऑफ द मॅच तुम रतन ना जाल्यार कोणे विंगड जन येवन घेव येता सप्तम वॅरियर्स तुकोनु. नेक्स्ट मॅच VV क्रिकेटर्स वर्सेस कोडियाल सुपर किंग्स ताजे मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड रामकृष्ण कामत. RK Strikers versus Saptami ताजे मॅन ऑफ द मॅच दीपक H. मोवाका H बावली. नेक्स्ट मॅच मंगलापुरम वर्सेस KSK ताजे मॅन ऑफ द मॅच प्रणव भट. मागिरी योधास वर्सेस RK Strikers ताजे मॅन ऑफ द मॅच वरुण शानबाग.
Warriors versus Saptamicha. Man of the match Vignesh Karkal. Vignesh Shanai Karkal. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಕಂಡಾಪಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಹಾಗೆ ಓಡಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪೂರ ಜನ ಅಲ್ಲ. KSK versus RK. Taj man of the match होता Saurav Bhakta. ताणेक तांगल एक टीम विन जावच्या कारण कसं म्हणारी तागल एक 2 रन आउट त्या एक विसरून ना पूर्ण जण लाईव्ह पुढे येतो पास म्हणारी रेकॉर्डेड. Semi-final match RK versus Saptami. Taj man of the match Ashwath Pai. नॉकआउट जलल टीम तांदल कोणे प्लेयर्स असला री जो ओनर्स असला री एक मोमेंटो घेवचा येवका म्हणून घेता. RK आणि VV सोड विंगट टीमाचे टीम मंगळापुर ओनर जो प्लेयर एक मोमेंटो घेवका टोकन ऑफ ग्रॅटिट्यूड आमगल तर्फे ना कोडियाल सुपर किंग्स. कोडियाल सुपर किंग्स GSB योदास टीमात कंजे एक प्लेयर आणि घेवका. स्पार्क उडुपीच्या कंचे एक प्लेयर आसा की स्पार्क उडुपी कोडियाल युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब. वीरांजने क्रिकेटर्स कापू कोणी असला री एक वीरांजने क्रिकेटर्स कापू. किंग्स 11 उल्लाल कंचे एक ओनर जो प्लेयर जो कोणी असा की इंडो सुपर वॉरियर्स कोणे प्लेयर असा की अनिरुद्ध भट. इंडो सुपर वॉरियर्स LP. एक लास्ट आजा डेडली पैंथर्स टीम आदुकोनु अक्षय कामत आणि घेऊ का मोमेंटो आणि वरल टीम कंचे होंग ना पडला त्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करूं आम्ही मोमेंटो दिताच. थँक्यू. तशीच लास्ट मॅचाच्या अद्भुत जावन जाल्यार लास्ट मॅचाच्या मॅन ऑफ द मॅच कोण आसतले? कोण आसता लास्ट मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच? विघ्नेश शणै कारकाळ. तांकां नित्यानंद भक्त मामान मेमेंटो आनीक इयरबड्स दिवन दिवंक घेता. महामाया डिस्ट्रिब्युटर्स तांणी इयरबड्स दिलेलो आसा. नेक्स्ट बेस्ट फिल्डर हिडी टुर्नामेंटाच्या बेस्ट फिल्डर जावन आमी वरुण शानबाग.
तांकां इयरपॉड्स मामा डिस्ट्रीब्यूट जाता दिल्लेला आसा त्या वरुण शानबागाक प्राइज दिवच्याक सिद्धार्थान आनी समर्थान येवन दिवका म्हणून घेता ताण ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 12 ಡಿಸ್ಮಿಸ್ केलेलं असतं ಈ विकेट कीपिंग ಅಂತೂ तशीच एमर्जिंग प्लेयर या टुर्नामेंटाच्या एमर्जिंग प्लेयर कसल गेसेस एनी गेसेस चंदुकोन बॉलिंग केलेलं असं Yes, Sanmukh Baliga from team Mangalapura. Sanu चलतो. आणि लायक एक बॉलिंग घाललो पुरे अंतू इकॉनॉमी बॉलिंग केलेलं असतं पुरे मॅच अंतू गणेश किडिमाम आणि ಒಟ್ಟೊಟ್ಟ दिग्गज प्लेयर्स आक विकेट काढलेलं असतं हांगाला गणेश किडिमाम आणि राजेश किडिमाम तांकां ट्रॉफीन एक वॉच युनायटेड टेलिकम्युनिकेशन आतां दिल्लें तसं एक स्मार्ट वॉच दिवका म्हणून घेता टूर्नामेंटाचे बेस्ट बॅट्समॅन Any guessing? Best batting. Tournament highest score aikalla. Padmanabhai Cordial ಪದ್ಮನಾಭ್ Super Kings. ತಾನು ಒಟ್ಟು 5 ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ದು 90 ರನ್ ಮರಲಸ ತಂದೆ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ 52 रमेश कामत मामान तांकां एक स्मार्ट वॉच आणि एक ट्रॉफी दिवका म्हणून घेता स्मार्ट वॉच स्पॉन्सर्स अगेन युनायटेड टेलिकम्युनिकेशन्स दीपक मल्ल्या टूर्नामेंटाचे बेस्ट बॉलर एनी गेसेस 14 विकेट काढलेला असा आरके टीमाच्या कार्तिक नायक तक दीपक मल्ल्यानं तांगेले स्पॉन्सर जावन आशिल्ल्या स्मार्ट वॉच आणि ट्रॉफी दिवका म्हणून घेता Man of the series. Man of the series. कोण असतला? Viku. All round performance. कोण असतला? Any guesses? ऐका ना. Yes, Vignesh Shadekar. चंद चलो स्मार्ट सिटी विघ्नेश शडाय V4NEWS. Man of the series आणि का शंकर किणी मणिपाल तांकां दिवका म्हणून घेता ताजेटो तांकां एक स्मार्ट मोबाईल फोन दिलेलो आसा युनायटेड टेलिकम्युनिकेशन आनी मोबाईल फोन दीपक मलमामान दिलेलो आसा आमकां मोबाईल फोन मेळटस तांकां मोबाईल फोन आनी ट्रॉफी मॅन ऑफ द सिरीज पॅन्थर ट्रॉफी सीझन 1 सेकंड रनर अप सप्तमी वॉरियर्स तांचा टीम ओनर आनी स्टेजार येवन तांकां मेडल आणि 25,000च्या कॅश प्राइज आणि ट्रॉफी घेवका तांकां प्राइज दिवच्याक हुंडी प्रभा कामत आणि यज्ञवंत पै तांणी मुखार येवन तांकां दिवका म्हणून घेता सेकंड रनर अप पॅन्थर्स ट्रॉफी पॅन्थर्स सुपर लीग ताच्या सेकंड रनर अप सप्तमी वॉरियर्स
सेकंड रनर्स अप सप्तमी वॉरियर्स एक चांगे खेळणू लायक एक गेम दिवन ओंगते पवेल असतानी फर्स्ट रनर अप आर.के. स्ट्रायकर्स तांकां 50,000 नगदू आणि एक मेडल तांकां डेडली पॅन्थर्स कस्टमाइज्ड सेकंड रन ट्रॉफी तांकां मंजुनाथ सानुमामान दिवपाक नेमून घेता. आर.के. स्ट्रायकर्स रनर्स PSL 2023 ओवरआर्म टूर्नामेंट फ्लडलाइट रनर्स आर.के. स्ट्रायकर्स Panthers Super League 2023 champions V4NEWS. तांणी स्टेजार येवका ओनर्स प्लेयर्स सगळ्यांनी तशीच तांकां सुरेश व्ही कामत आणि जयराम राव तांणी 1 लाख रुपयाच्या चेक आणि एक ट्रॉफी ताजेटूची आमगेल्या रोलिंग ट्रॉफी त्या सगळी तांकां दिवपाक नेमून घेता. वीर वेंकटेश वॉरियर्स champions. Panthers Super League 2023 champions वीर वेंकटेश वॉरियर्स.
champion, Jordan Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Kelly a champion, 958 Bolt a champion. Champion, 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 champion. Everybody knows say Bravo a champion. Champion, champion. पुऱ्या ऑर्गनायझिंग कमिटीच्या मेंबर्स वैरेव का नारायण बाळेगा पै इलेक्ट्रिकल्साच्या कोणे एकला येऊन एक टोकन ऑफ ग्रॅटिट्यूड घेऊ का म्हणून विनंती करता.